I think खाना एक ऐसी चीज है, this is the least we could do for somebody when we are together, and I think ये चीजें बहुत परे हैं लड़ाई झगड़ों से, नेगेटिविटी से। फरीदून, आई फील अगर आप मन से सच्चे होते हो ना, तो बहुत बार परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन स्ट्रैटेजीज फेल हो जाती हैं। आई थिंक शायद मेरे साथ काफी चीजें गलत बोली गई, कैरेक्टर असैसिनेशन किया, एंड आई थिंक आई एम द ओनली कंटेस्टेंट जिसको सलमान सर ने थ्रू आउट द सीजन बैश नहीं किया है। पीपल हैव नॉट सीन मच ऑफ माई स्ट्रगल, हैव नॉट like I have not spoken much about like how I came to the industry, how difficult it was, because I was told that you're not dating an actor, a producer, or a star kid. How would you make it here? It was totally orchestrated. It was a fake thing from both ends. Did you come to know once you came out of the house that on the social media a lot was being said about Sajid? Yes, but the thing is, how does it matter? सौंदर्य शर्मा, वेलकम ऑन कनेक्ट एफएम कनाडा। कैसी हैं आप? मैं अच्छी हूँ, आप कैसे हैं? बहुत बढ़िया। सौंदर्य, जैसे मैं आपसे पहले भी कह रहा था कि दैट आई वाज प्लेजेंटली सरप्राइज्ड बाय हाउ यू कंडक्टेड योरसेल्फ इन द बिग बॉस हाउस। एक बहुत ही डिग्निफाइड सा आपका स्टांस था और बहुत ही बैलेंस सा आपका स्टांस था। बहुत बार लोग अपने आप को खो देते हैं उस घर के अंदर, मुझे लगता है कि आपने अपने आप को पा लिया है। Ji, totally, Faridoon, totally. Because first of all, I always felt that I am not meant for a reality show, and I am a big misfit there because I am a terrible manipulator. I cannot fight over coffee, sugar, milk, and all that, and I cannot lie for goddamn sake. तो मेरे लिए ये बहुत difficult था कि लोगों के साथ रहना. I am afraid of strangers. I've never done community living in my life. तो definitely मेरे लिए revelations हुए हैं कि this is who I am, and this is my personality is. और जो एक्सपीरियंसेस बिग बॉस ने दिए हैं, आई बी वेरी ग्रेटफुल बिकॉज मैंने ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स पे मैंने इतनी चीजें सीखी हैं कि आई डोंट थिंक आई कुड हैव एवर गॉन टू एन इंस्टीट्यूट एंड लर्न दोस। यू नो, बहुत से कमेंट्स जो आ रहे हैं कि जिस तरीके से आपने लोगों के लिए खाना बनाया और एक खासा आपने सेल्फलेस तरीके से आपने खाना बनाया, इवन दो अगर सर्टेन लोगों से आपका अगर कोई बहुत ज़्यादा अच्छे टर्म्स पे आप नहीं थी, बट स्टिल यू आर वेरी फेयर एंड सेल्फलेस। मुझे लगता है कि आपके आपके पेरेंट्स तो बहुत बहुत प्राउड फील कर रहे होंगे आपके लिए। ऑनेस्टली, बिकॉज मेरे पेरेंट्स भी शायद मेरे ये ट्रेड्स जानते नहीं थे, तो उन्होंने जब देखा दे वर लाइक ओके, गुड जॉब। एंड आई थिंक खाना एक ऐसी चीज है, दिस इज द लीस्ट वी कुड डू फॉर समबडी व्हेन वी आर टुगेदर, एंड आई थिंक ये चीजें बहुत परे हैं लड़ाई झगड़ों से, नेगेटिविटी से, एंड दिस इज द काइंड ऑफ पर्सन आई एम। आई थिंक आई एम अ पर्सन हु इज वेरी गिविंग बाय नेचर, and credit goes to my upbringing, my family, and also the profession I come from. Being a medical student, a doctor, I have always been closely associated with the patients, and there you have to be a very good listener and giving and warm towards the person. And I think वो चीज शायद मैं जब बिग बॉस के घर में थी मैंने देखी। कुछ लोगों से इतना गुस्सा और नफरत उस वक्त महसूस होती थी कि इसने मुझे ऐसे बोल दिया, ऐसे रिएक्ट किया, बट somehow my heart was so warm towards कि okay fine, you know, गुस्सा आ गया होगा। I cannot hold on to things. I don't hold grudges against anyone, and I think हम सब human beings ऐसे हैं जिनके ups and downs होते हैं, गुस्सा होता है। So एक वो मेरा एक हमेशा पार्ट है कि मैं खाने पे और इन चीजों पे गुस्सा नहीं निकाल सकती हूँ। Never, I can never do that. ओके, एंड जैसे आपने कहा कि दैट आई एम अ टेरिबल मैनिपुलेटर, लेकिन आप ऑलमोस्ट आखिर तक आप टिकी रहीं घर के अंदर। सो आपको क्या लगता है कौन सी आपकी ऐसी क्वालिटीज़ थी जो कि बाहर लोग देख रहे थे, जिसकी वजह से आप यू जस्ट सर्वाइव फॉर द लॉन्गेस्ट पीरियड ऑफ टाइम? फरीदून, आई फील अगर आप मन से सच्चे होते हो ना, तो बहुत बार परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन स्ट्रैटेजीज फेल हो जाती हैं। एंड बहुत लोगों ने बोला आप अच्छा खेल रहे हो, अच्छा खेल रहे हो, बट मुझे नहीं पता था कि खेलना क्या होता है, बिकॉज आई वॉज जस्ट बीइंग माई सेल्फ। जो मैं घर के अंदर हूँ वो मैं बाहर हूँ, बिकॉज आई एम समबडी हु कैन नॉट, लाइक आई सेड, आई कांट लाई। तो मुझे लगता है कि सच्चे से रहना और सच्चाई बोलना इज द इजिएस्ट थिंग टू डू, क्योंकि मैं फेक नहीं कर सकती हूँ 24/7। कभी ना कभी तो इंसान एक्सपोज होता ही है। सो मेरे लिए सबसे इजीएस्ट था टू बी माई सेल्फ, एंड आई थिंक वो एक कारण था जिससे लोगों की शायद कनेक्टिविटी हुई होगी। आई डोंट कम फ्रॉम लाइक अ वेरी बिग टीवी फैन बेस वाला बैकग्राउंड से। आई हैड जस्ट डन अ फिल्म एंड 2-3 वेब शोज जो कि रिलीज हुए जब मैं बिग बॉस के टाइम पे थी, तो बहुत लोगों ने मेरा शायद काम भी नहीं देखा होगा, मुझे जानते भी नहीं होंगे। But what maybe I feel what connected with them was because most of us are like that in real life. We are not very exaggerated, hyper personalities. जैसे आपको भी अगर कभी गुस्सा आएगा तो वो एक मोमेंट के लिए आएगा, आप 24 घंटे उस जोन में नहीं रहेंगे। Most of the people were doing things for the camera over there.
And I thought it's very exhausting. मतलब मुझे रहना होगा तो मैं रहूंगी, जाना होगा तो जाऊंगी. I'm here for a journey, just for a trophy. Of course I'm ambitious, of course I'm competitive, but for that matter, अगर मैं अपने आप को खो दूंगी तो what's the point of a reality show? I don't know what works in a reality show. I'm not a colors face. I'm not coming from जिसके push and pulls हो, drags हो. बट आई थिंक शायद मेरे साथ काफी चीजें गलत बोली गई, कैरेक्टर असैसिनेशन किया, बहुत तरीके से मुझे प्रोवोक किया गया. बट आई एम नॉट समबडी हु वुड गेट प्रोवोक लाइक दैट, एंड आई एम नॉट दैट वीक एज अ पर्सन. सो आई थिंक आई वाज जस्ट बीइंग ट्रू टू माई सेल्फ कि अगर नॉर्मल लाइफ में मुझे कोई इस तरह रिएक्ट करेगा, बोलेगा, गाली देगा, कुछ करेगा, am I going to go and react to that person? No, for sure not. I would maintain my calm and dignity, because I keep my anger to the people who I am close to, because anger is also an emotion, and why to give my emotion to strangers? ऑलराइट, सो मैं आपको आपकी पहली फिल्म से जानता हूँ और काफ़ी हमने ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम साथ में इंटरव्यूज़ भी करें. मेरा जो एक परसेप्शन आपके बारे में ये है कि दैट जैसे आपने कहा कि मैं कॉम्पिटिटिव हूँ, एम्बिशियस हूँ, लेकिन आप मीडिया में बने रहने के लिए आप कुछ भी नहीं करती हैं. ये एक बहुत ही आई थिंक यूनिक सी क्वालिटी है जो कि आई थिंक लोगों ने पहचाना भी आपको एज फार एज योर डिग्निटी एंड ऑल दीज थिंग्स आर कंसर्न. एक ऐसे घर में रहना जहाँ पर हर कोई जो है पूरे टाइम के हिसाब से प्लान करके आ रहा हो कि मुझे ऐसी हरकतें करनी होंगी ताकि ताकि मुझे फुटेज मिले, ताकि मुझ में दिलचस्पी बनी रहे, चैनल मुझ में Yes. दिलचस्पी रखे, मुझे ज़्यादा दिखाया जाए, सलमान सर मेरे बारे में ज़्यादा बात करें, मे बी मुझको डांटे भी. वो डांटना भी जो है वो एक साइन ऑफ अटेंशन है. तो Absolutely. फॉर समवन लाइक यू, हाउ डिड यू मैनेज इट? So the thing is, like I said, कि I can't fake it. आपने बहुत सही बोला कि लोग स्ट्रैटेजी बना के आते हैं, जिन चीजों का बहुत खुलासा भी हुआ 15th वीक में आके. हम लोग तो डे वन से बोल रहे थे. People had planned their love angles and they had come up with a strategy. Good to them, because they are there for a game. They have been following Big Boss. For me, somebody who was there just for a journey and for a bigger reach, I didn't have these ideas and plans in my mind. Uh, और रही बात attention की, definitely the biggest highlight of my life was to be meeting Salman sir every weekend, and all of us who are newcomers and wanting to be in the industry and trying to make a foothold. हम चाहते हैं कि हमें बड़े लोगों से जो already established है उनसे एक acknowledgement मिले, एक एक अटेंशन मिले, और हमारे हमारे अच्छे पर्सनालिटीज और काम के बारे में बात हो. तो दैट यूज्ड टू बी अ हाईलाइट, बट आई नेवर यूज्ड टू डू दैट एट द कॉस्ट ऑफ माय पर्सनालिटी एंड पीस. कि झगड़ा कर लो, ये कर लो, वो कर लो. एंड आई थिंक आई एम द ओनली कंटेस्टेंट जिसको सलमान सर ने थ्रू आउट द सीजन बैश नहीं किया है. ही इज नेवर बैजर्ड मी, स्पोकन एनीथिंग. सो नाउ डाउन द लाइन आई हैव रियलाइज्ड दैट इट्स बीन अमेजिंग. सो जरूरी नहीं है कि अटेंशन के लिए आपको कुछ नेगेटिव ही करना है. लाइक लुक एट अब्दू फॉर दैट मैटर. ही वाज लव्ड द मोस्ट, and he didn't do anything for that matter just for attention. He didn't have fights, he didn't manipulate people. So I think you don't have to be negative to get attention, and I am one of those. Since you said that yes, of course we've known each other, we've done interviews together, but I have never created a false controversy, a hookup controversy just to be in the news, because I'm not like, I am desperate for my work, but I'm not somebody who will be on the face showing it. Of course, you have to be hungry for your work, but not by hook or crook, because I think what matters is how you are as a person. आप कितनी शिद्दत से अपने काम को follow करते हो. और I am just not coming from a negative space, because struggles सबकी रहती हैं. सो बिटरनेस आ जाती है, and उसके बहुत सारे शेड्स हमने बिग बॉस के घर में लोगों की पर्सनालिटीज में भी देखे हैं. मैंने आप लोग तो 1-1.5 घंटा देखते थे, मैं 24 घंटा वहां रहती थी. So it was very, very difficult, Faridoon. But having said that, at the same time, it was easy as well, क्योंकि आपको ना दृढ़ता में विश्वास होनी चाहिए. और मैं बहुत ज्यादा अपने काम को लेके दृढ़ हूँ, और शायद लोग अब मुझे पहचान पाएंगे. पीपल हैव नॉट सीन मच ऑफ माई स्ट्रगल, हैव नॉट like I have not spoken much about like how I came to the industry, how difficult it was, because I don't want to give my sob story all the time outside, because I want to inspire people who are coming from nowhere, coming from different backgrounds, different cities. Like I come from a Brahmin family. I am a doctor. For me, it was next to impossible to get into this industry. There was no godfather. I was told that you're not dating an actor, a producer, or a star kid. How would you make it here? So many chati. I try to always make it look effortless and yet work hard towards it. So I think if you being yourself in your element, people love you and notice you, and probably that's what has happened even in the Big Boss house. And yes, emotionally, I used to get, even I was broken.
I had nobody. मुझे कभी confession room में नहीं बुलाया गया फरीदून समझाने के लिए. Apart from me, every single contestant was called in confession room and guided that you should behave in this manner. You should just आपने इस बात पे झगड़ा क्यों नहीं किया, आपके लिए राशन जरूरी नहीं है. I was never told and guided आप ये करो वो करो ऐसे मत करो. So yes, I used to feel very lost at times, but I would my superpower was just being myself. ओके, जैसे आपने कहा कि सलमान सर ने आपको आपको बैजर नहीं किया, बट काउंसिल किया उन्होंने आपको. During the third and fourth week, when there was a thing about mine and Gautam's relationship, he guided me that there is this person, you're believing in him. And he made me realize, he made me feel in a manner that he's very genuine about it and everything, he's falling for it. I don't know unke mindset mein kya tha and whether he actually, fall for me. At that moment, he fell for me. Abhi to I haven't spoken much on this. He did speak to me now. But उस टाइम पे मुझे नहीं पता लग रहा था. And I am somebody, I like to trust people, Faridoon. Like, I always believe कि अगर मैंने लाल चश्मे पहने हैं ना तो मुझे दुनिया लाल दिखेगी. अगर आपने काले पहने आपको दुनिया काली दिखेगी. तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर मैं सच्ची हूँ, मैं अच्छी हूँ, तो सामने वाला भी अच्छा है. And he swore by and everything and he made me believe that he has love for me and fondness towards me. And on the contrary, when he used to sit and talk to people, the image, the message which was being sent was contrary to what he used to say. जिसके लिए करण सर और सलमान सर ने मुझे समझाने की कोशिश करी. नहीं asked me and he said, sir, he swore by his parents, so I believe him. I don't know what it is. So I like to give that benefit of doubt, of trust, because मुझे लगता है कि विश्वास पे दुनिया कायम है, हमको करना पड़ेगा. So I was genuinely believing in him, but the moment I felt the disconnect, I was the one who stood up and said that I felt disconnected. A lot of people must have said, oh, she's fake, she did it for the game. But if I did it for the game, I would have been in the game uh, till the finale. I could have easily piled on to that feeling saying, oh, I felt for it. और लोगों की sympathy में ले सकती थी कि I still feel for him, still, there is this love. But I rather chose to voice my opinion that I felt disconnected after that. क्या आप कहेंगे that you were a quick learner? Yes, for sure. And I think इसमें कोई गलत बात नहीं है. We all make mistakes. You must have made mistakes. Everybody make mistakes. And I think we should learn from our mistakes, and especially when someone guides you like Salman sir and Karan sir. So definitely, yes. ओके, एंड शिव और शालीन और टीना का जो एक सारी चीज़ें सामने आई, बहुत से लोगों को लगता था कि मे बी शायद वो उतना जेन्युइन नहीं है. आपको क्या लगता था? Yes, totally. It was totally orchestrated. It was a fake thing from both ends, and they were playing along. And in fact, during November, around 7th or 8th week, Charlene had come and spoken to me on this, and I don't know if they had shown it or not. He categorically mentioned that she only does it for the cameras and everything. But at the same time, जब weekend का वार हुआ, सलमान सर ने बोला, no, Tina is being real and she's been with you. And लेटर ऑन चीजें 15वें वीक में पूरी ऑपोजिट हो गई थी. सो ये बातें उन्होंने मुझे पहले भी बोली थी, बट द फैक्ट वाज ही वाज स्टिल प्लेइंग अलोंग. तो वो भी उनका एक गेम प्लान था. वेदर बीइंग टुगेदर फेकिंग लव वाज स्टिल ऑर्केस्ट्रेटेड. और जब उनका नहीं था और एवरीवन स्टार्टेड टू क्वेश्चन सो मच कि ये फेक है, दैट वाज आल्सो पार्ट ऑफ द गेम प्लान. बिकॉज आई क्वेश्चनड हिम इन अराउंड 13th वीक कि अगर आप दोनों को इतनी प्रॉब्लम है, यू हेट हर सो मच, व्हाई डोंट यू नॉमिनेट ईच अदर. जो कि 15th वीक के एंड में सलमान सर ने पूछा कि अगर इतना तुम लोगों का प्रॉब्लम है, तुम बाहर से ऑर्केस्ट्रेट करके आए हो, फिर भी एक दूसरे को तुम नॉमिनेट नहीं कर रहे हो. So that was again a game plan कि hook or by crook, unless it fell flat on their, they admitted and hated each other so much. So people do all this for their games and good for them, God bless them. I'm nobody to talk about it, but I can never do something like that. Even if I'm the last person standing for my feelings, my righteousness, I would be doing that even if I am being judged, and that's what I did, unlike them. Okay, what about Archana? Yes, my relationship with Archana is genuine. And I and Archana were the one who actually had the worst fight of Bigg Boss season, which was initially in first or second week. And we did not talk. And then naturally this bond happened. And she was the one who was judged the most. I was the one who was judged the most. And then they said, it is for the game, it is for this and that, it is not fake. They fight with each other, पीछे फिर दोस्त बन जाते हैं. Especially Tina question, because I think she's not genuine with anybody. So that is why उनको हमेशा ये लगता था. But I have the purest bond with Archana. Though we are very stark personalities, but that bond is really
genuine and real. Okay. And what about Sajid? Oh Sajid yes, Khan. Sajid ji is an amazing human being. His emotional quotient is very high, and I discovered a very childlike, vulnerable person in him. He's very honest with creating bonds with everybody. I think he was loved by everybody in the house. Okay, but um, did you come to know once you came out of the house that on the social media a lot was being said about Sajid? Yes, but the thing is, how does it matter? Uh, I feel that was something related to his personality and past, and I am nobody to comment. But what I know of Sajid sir is in the house, and to me, he's a great human being, and I wish him all the luck and whatever positivity he gets, because he deserves that. He's a good human being, and I think he's misunderstood as well. I'm sure he must have had certain things I'm not aware of. I didn't read much into details because, like I said, I don't harp onto negativity much. A lot must have been said about me as well. I can't go back and correct people or do things or what has happened with him or in his life. But I can only say that he's been amazing, and we really developed a good bond there.